ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है, गणित मैथमेटिक्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कह सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, सभी को मालूम है कि यूपीएससी के मुख्य एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में हमें एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है, ऐच्छिक विषय का चयन करना होता है, और उसी ऐच्छिक विषय में, उसी वैकल्पिक विषय में हमें कह सकते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, चाहे आप लिटरेचर के सब्जेक्ट को ऑप्ट करें या अदर कोई सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, जो भी आपके कह सकते हैं मनपसंद का हो, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, और कनिष्ठ कटारिया साहब का भी मैथमेटिक्स था। ये बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसका बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 का सिलेबस हम लोग देखेंगे। कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, और हम यहाँ सिलेबस को बस रीड करने जा रहे हैं एट ए ग्लेंस। पहले नज़र में यह जानने का प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स ऐच्छिक विषय, गणित के वैकल्पिक विषय में क्या क्या कंटेंट होते हैं, और ओवरव्यू हम बस लेने जा रहे हैं। बस हम इसे रीड करने के बाद हम कह सकते हैं कि एट ए ग्लेंस पहली नज़र में यह जान पाएंगे कि मैथमेटिक्स एज ए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जो ऐच्छिक विषय है उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है। तो आइए पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा, पॉइंट नंबर 1 से। वेक्टर स्पेस ओवर आर एंड सी, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सब स्पेसेस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक्स एंड nullity matrix of a linear transformation. Algebra of matrix, row and column reduction, Elchon's form, congruence and similarity, rank of a matrix, inverse of a matrix, solution of system of linear equations, in-gen values and in-gen vectors, characteristic polynomials, Cayley-Hamilton theorem, symmetric, skew-symmetric, Hermitian, skew-Hermitian ontology, and unitary matrix and their in-gen values. Point number 2, calculus, real numbers, functions of a real variables, limits, continuity, differentiability, mean value theorems, Taylor's theorems with their remainders, in determinate forms and maxima and minima, asymptotics, curve tracing, functions of the 2 or 3 variables, limits, continuity, partial derivatives, maxima and minima, Lagrange's methods of multipliers and Jacobians. Riemann's definition of definite integrals, indefinite integrals, infinite and improper integrals, double and triple integrals, evaluation techniques only, area, surface and volumes. Point number 3, analytic geometry, Cartesians and polar coordination in 3 dimensions, second degree equation in 3 variables, reduction to canonical forms, straight line, shortest distance between 2 screws lines, planes, sphere, cone, cylinder, and paraboloid, ellipsoids, hyperboloid of 1 and 2 seats and their properties. Ordinary differential equations, formulation of differential equations, equation of the first order and first degree, integrating factors, orthogonal trajectory, equations of a first order but not of the first degree, and Cayley-Lott equation, singular solution, second and higher order linear equations with consonant coefficients, complementary functions, particular integral and general solution, second order linear equation with variable coefficient, Euler-Cauchy equations, determination of the complete solution when one solution is known using method of variation of parameters, Laplace and inverse Laplace transformation and their properties, Laplace transformation of elementary functions, application to initial values problems for second order linear equations with constant coefficients. Point number 5, dynamics and statics, rectilinear motions, simple harmonic motions, motion in the plane, projectiles, constant motion, work and energy, conservations of energy, Kepler's law, orbit under the central forces, equilibrium of a system of particles, work and potentially energy, fictions and common catenary principle of virtual works, stability of equilibrium of forces in the 3 dimensions. Point number 6, vector analysis, scalar and vector field, differentiation of the vector fields of a scalar variables, gradient, divergence and curl of the Cartesians, cylindrical coordinates, higher order derivatives and vector identities and vector equations, application of to geometric curves in spaces, Weicher and Torrison's Serret-Furnet's formula and Gauss-Stokes theorem, green identities.
पेपर 1 का सिलेबस हो गया। अब हम लोग मैथमेटिक्स पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, अलजेब्रा, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, कॉसेट्स, Lagrange theorem, normal subgroups, quotient groups, homomorphisms of groups, basic isomorphism theorems, permutations group, Galileo's theorems, rings, subrings, and ideals, homomorphisms of rings, integral domains, principal ideal domain, Euclidean domain, and unique factorization domains, field, quotient fields. Point number 2, real analysis, real number system as an order filled with the list, upper bound, property sequence, and limit of a sequence, Chaucer's sequence, completeness of the real line series and its convergence, absolute and conditional convergence of series of real and complex terms, rearrangement of series, continuity and uniform continuity of functions, properties of continuations, functions on combat set, Riemann's integral, improper integrals, fundamental theorems of integral calculus, uniform convergence, continuity, differentiability, and integrability of sequences and series of functions, partial derivatives of functions of several 2 or 3 variables, maxima and minima. Complex analysis, analytical functions, Chaucer's, Riemann's equation, Chaucer's theorems, Chaucer's integral formulas, power series, representation of an analytic functions, Taylor series, similarities, Laurent series, Chaucer's residues, theorems, and contour integrations. Point number 4, linear programming problems, basic solution, basic feasible solution, and optimal solution, graphical methods, and simplex method of solution, and duality, transportations, and assignment problems. Partial differential equations. Point number 5, family of surfaces in 3 dimensions and formulation of partial differential equation, solution of the quasi-linears and partial differential equation of the first order, Chaucer's method of characteristics, linear partial differential equation of the second order with consonant coefficient, canonical forms, equation of a vibrating string, heat equation, equations and their solutions. Point number 6, numerical analysis and computer programming, numerical methods, solution of algebra, transcendental equations of one variables by bisection, irregular false, Newton's Raphson's method, solution of a system of linear equation by Gaussian's eliminations and Gaussian's Jordan's direct, Gauss's Seidels, aerative methods, Newton's forward and backward, and interpolations, Lagrange's interpolations, numerical integrations, trapezoidal rules, Simpon's rules, and Gaussian's quadrate formula, numerical solution of ordinary differential equations, Euler's and Rangakuta methods, computer programming, binary system, arithmetic and logical operations of numbers, octal and hexadecimal system, conversions and to and from decimal system, algebra of binary numbers, elements of computer system and concept of memory, basic logic gates and truth tables, Polygon's algebra and normal forms, representation of unsigned integers, signed integers, and real, double, precisions, real and long integers. Mechanics and fluid dynamics, generalized coordination, D'Alembert principle and Lagrange's equation, Hamilton's equations, moment of inertia, motion of rigid bodies in 2 dimensions, equation of continuity, Euler's equation of motion, 4, inviscid flow, streamlines path of particles, potential flow, 2-dimensional axisymmetric motion, source of sinks and vortex motion, Navier-Stokes equation for a viscous fluid. तो ये पेपर 2 का सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का। अब इसके पहले हम लोगों ने पेपर 1 का ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि मैथमेटिक्स, गणित जो कह सकते हैं कि का ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। डिटेल्ड सिलेबस हम लोग बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का देखा। तो हम बस यहाँ पहले ही बता दिया था कि हम रीड करने जा रहे हैं, जिससे कि हम एक ओवरव्यू एट ए ग्लेंस पहले नज़र में यह जान पाएँ कि मैथमेटिक्स गणित का डिटेल्ड सिलेबस क्या है। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट हैं, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।